for that. We have proof for all the avataras. We have proof for Lord Rama Avatara also. If he's come to India, you can see all the evidences. You can go to Lanka and see the evidences. Previously, Sri Lanka is part of this India, this Bharata. So everything we have proof. Even in Lord Krishna Avatara, we have proof in Madura, Vrindavan. We have proof in Dwaraka. We have palaces. One palace is out of the sea. The archaeologists find lot of palaces under the sea. So all our history, since this happened ages before, we can't forget those history. And Lord Himself is incarnated and shown us the way. So everything is history, and Lord comes to here to maintain dharma. Not only that, in Dasavadara, if we see from Makshya to Kalki Avadara, he shows the evolution of human process. Sri Rama is also an extraordinary personality who is devoted to, who is very kind and lovable to his brothers. So if we can speak about Lord Rama's Avadara, one day is not enough, 2 days is not enough. We can even speak his Leelas for the whole year. A lot of information we can gather. It's not a small. Lord Rama Avadara is, whenever we hear Lord Rama's name, the devotion will come, the divine ecstasy will come to everyone. அவதாரத்தின் நோக்கம் இலங்கையிலே துரியோதன சகோதரர்களை அழிப்பதற்காக மகாவிஷ்ணு எடுத்த அவதாரம் தான் ராமாவதாரம். ராவணனுடைய சகோதரர்கள் துரியோதனன்ல மன்னிக்கணும், ராவணனுடைய சகோதரர்களை அழிப்பதற்காக எடுத்த அவதாரம் தான் ராமாவதாரம். So Lord Rama took his avatar to destroy the Asuras, mainly the Ravana and his brothers. நான்கு பேர்களும் மிக சிறப்பான வரமாய் திருமாவை நோக்கி தவம் செய்து, ஏன்னா மூலக்கதைகள் நிறைய இருக்கிறது. So right now we are shortening it up because we need to perform the homam. I will just tell you about Ravana and his birth. So after that we will perform japa. So if you see Ravana is a grandson of, he is a son of Pulastya, who married Kaigasi, the daughter of Sumali. While Visravas and Kaigasi were living in the forest, Slesmataka Kaigasi became pregnant. She delivered 4 children in 4 yamas with an interval of 1 yama between them. The elder 3 were the famous Rakshasas, Ravana, Kumbhakarna and Vibhisana. The 4th one, a girl, was named Surpanaga. And if you see Uttara Ramayana, the Kubera was another son of Visravas, born of another wife called Devavarni. As soon as the age of Kubera came, he captured the Puspaka chariot and began ruling the kingdom with Lanka as capital. So, if you see Ravana, he also born in a very great ancestral hereditary. And in his life, Ravana got lot of boons. He got lot of boons, and even he got lot of curses. Curses like Nalakupara Saba, Vedavadistapa, Brahmana Saba, Nandikeswara Saba. All those is because he got the curses. He got accumulated more curses, and he made lot of sins. And the planet stands against him. Even though he has the boons of controlling the planets, his curses from various exemplary their people made him to suffer and be killed with the Lord Rama's hand. So please witness this japa and homam. We are going to do Rama japa and Rama ahutis in this homam. We are already invoking Agni. We are going to do the Lord Rama homam,
and we are also going to invoke Lord Hanuman into this Homam with some Hanuman avartis. ராமாவதாரத்தில் தான் ஹனுமான் வந்து சேர்கிறார். அதனால ஹனுமான் நாமத்தை ராமநாமத்தை எவ்வளவுக்குள்ள சொல்லுகிறோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு ஒரு சகோதரத்துவம், ஒரு நம்ம எடுத்ததுடைய நோக்கம் இதெல்லாம் நிறைவேறுகிறது. அதுதான் இதுல ரொம்ப ராமாவதாரத்துடைய மகிமை. So Lord Rama is so special. If you say Rama Rama Rama, you not only get blessings from Lord Rama, Hanuman will there at that moment in your place, because Hanuman is a Chiranjeevi who is living in this Bhuloka. Wherever Lord Rama's name is here to him, he will go there and work with his devotees of Lord Rama. So that's why Lord Rama is so special. So please witness this Homam. Please pray that all the goodness happens to your life. शासनासने अभि तस्मात् विराट जायजा विराजो अधिपूर्णः तदारोद्धरिक्षता पश्चात्तो विमतो पुरः यत्पुरुषेण हविषाः देवायज्ञमदन्वता वसन्तोऽस्या सीधाज्यं ग्रीष्म युग्मः शरद्रविः सप्तास्या सुन्दरदयः सप्तसमितकृताः देवादित्यज्ञन्दन्वानाम् अभद्रन् पुरुषं वसुं तं यज्ञं परिविप्रौक्ष्यन्ने पुरुषं जातमकृतः तेन देवायन्ता साध्यार्षयच्छये तस्मात् यज्ञाः सर्वभूतः यजस्सामान्यज्ञे छन्दांसि तस्मात् यजस्तस्मात् अजायन्ता तस्मात् अजायन्ता एकेतो भयानतः गावो यज्ञे तस्मात् जाता अजावयः यत्पुरुषं जलदुः कथिताव्यकल्पयन् मुखञ्जिमस्य गौभागो कावूरूपादा उच्यते ब्राह्मणो अस्य उपवासीति बाहूराजन्यकृतः ऊरोदर्भैस्यः पद्भ्यागं सूत्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत उहादिन्द्रः साग्नि च प्राणाद्वाजुरदायत ताभ्या आसी अन्तरिक्षं योजमद्धता लोकान् कल्पयन् वेदागमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमदस्तु वारे सर्वाणि रूपाणि विप्रतीरः नामानि कृत्वा वदन्यदास्ते धाता पुरस्ताद्यमुदाजगार चक्रप्रविद्वां सहस्रः त्वमेवं विद्वान् अमृतैकभवति नान्यपन्थाजनानि विद्यते यज्ञेन यज्ञमयन्तु देवाः तानि धर्माणि कृतवान्यासन् ये गणागुं महिमाः सन्ति तत्र पूर्वे साध्यासन्ति देवाः अभ्यसम्भूतपृथिव्यरसाश्च स्वकर्मणः समवर्धतानि तत्तत्तृष्टान्ततत्रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदागमेदं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमतत्परस्तात् त्वमेवं विद्वान् अमृतैः भवति नान्यपन्था विद्यते येनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति योनिं मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेदतः यो देवेभ्यो आदपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमोर्जाय ब्राह्मणे इदं ब्राह्मं जनयन्तः देवा जते प्रवन्ने द्वैतं ब्राह्मणो विद्यात् यस्य देवा सर्वसे गिरीशदे लक्ष्मीश्च पत्न्यौ अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अस्मिनौ व्याप्तम् इष्टं मनिषाण अवं मनिषाण सर्वं मनिषाण सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वसन्धुवं विश्वनारायणं देवमक्षरं परमं पदं विश्वदपरमानित्यं विश्वनारायणं हरिं पदिं विश्वशाश्वतमुंशोमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायणपुरं नारायणपरः नित्यलिङ्गः सर्वं दृश्यते अन्तर्भजतर्मभ्यनारायणस्थितः अनन्तमव्यगं गभीरं पद्मभोसप्रदेगास्कृतेञ्जासलोकम् बालबालागुलं भाजस्यस्याय शनमगं सन्ततगं शिला विलम्बस्यागं सजं दस्यान्निश्चिरगं अन्निशिका अनियो नीलदोयमध्यन्ता दुल्लेगे वास्परा निवाय सुखमत्तन्नि पीतावाः
तिरुवादस्यास्गायामध्ये परमात्मा उपस्थितः सब्रह्मस्य वसः नित्येन्द्र सूक्षर परमस्वराड तकं सत्यं परं ब्रह्मपूर्णं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेदं गुरुवाक्यं स्वरूपाय नमो नमः नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा. Lord Rama is already involved in Agni. Please get the blessings of Lord Rama, who is already in the Agni. नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा. नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा. नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा. विष्णोर्नदं वीर्याणि प्रभो संयपात्वानि अस्कवान् उत्तरम् मानतेदोर्गाजो विष्णोरराटं विष्णो विष्णवसि विष्णो तत्रेन्द्रो विष्णो शिवरसि विष्णो ध्रुवमसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा महाविष्णवे स्वाहा. ओम केशवाय स्वाहा. ओम नारायणाय स्वाहा. ओम माधवाय स्वाहा. गोविंदाय स्वाहा. विष्णवे स्वाहा. मधुसूदनाय स्वाहा. त्रिविक्रमाय स्वाहा. वामनाय स्वाहा. श्रीधराय स्वाहा. श्रीजेशाय स्वाहा. पद्मनाभाय स्वाहा. दामोदराय स्वाहा. नंदनंदनाय स्वाहा. धम्ने स्वाहा. अनिरुद्धाय स्वाहा. अधोक्षराय स्वाहा. उभेन्द्राय स्वाहा. नारसिंहाय स्वाहा. महाविष्णवे स्वाहा. ओम दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात् स्वाहा. We are offering prasadam, sweet prasadam to Lord Rama, who is there in Agni. दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात् स्वाहा. 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 दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात् We स्वाहा. are offering herbs. दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात् स्वाहा. दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो Auspicious herbs, aromatic herbs to दाशरथाय Lord विद्महे Rama. सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात् As part of this yajna ritual, दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात् स्वाहा. दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात् स्वाहा. दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात् स्वाहा. रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय अमृते नमः स्वाहा. रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय अमृते नमो नमः स्वाहा. रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय अमृते नमः स्वाहा. रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय अमृते नमः स्वाहा. रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय अमृते नमः स्वाहा. रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय अमृते नमः स्वाहा. रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय अमृते नमः स्वाहा. रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय अमृते नमः स्वाहा. दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामचंद्र प्रचोदयात् स्वाहा. दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामचंद्र प्रचोदयात् स्वाहा. दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामचंद्र प्रचोदयात् स्वाहा. महादेव्यै विद्महे विष्णुपत्न्यै धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा. महादेव्यै विद्महे विष्णुपत्न्यै धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा. महादेव्यै विद्महे विष्णुपत्न्यै धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा. महादेव्यै विद्महे विष्णुपत्न्यै धीमहि
तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा ओम रामाय स्वाहा रामचंद्राय स्वाहा रघुनाथाय स्वाहा राघवेंद्राय स्वाहा तवे स्वाहा त्रिभुवनाय स्वाहा तवे स्वाहा आदाय स्वाहा अमृताय स्वाहा विद्याय स्वाहा सूक्ष्माय स्वाहा इंदाय स्वाहा प्रभाय स्वाहा भलाय स्वाहा नरावाय स्वाहा तवे स्वाहा योगाय स्वाहा नाय स्वाहा अमृताय स्वाहा रक्षाय स्वाहा कर्कणाय स्वाहा पद्माय स्वाहा बुद्धि स्वाहा वाय स्वाहा शिवधनुषवे स्वाहा रामावतीहा सीताय स्वाहा भरदाय स्वाहा शत्रुघ्नाय स्वाहा लक्ष्मणाय स्वाहा विद्याय स्वाहा भंडाय स्वाहा उत्तराय स्वाहा दशरथाय स्वाहा महादाय स्वाहा पद्माय स्वाहा युवाय स्वाहा ध्रुवाय स्वाहा उराय स्वाहा क्षवे स्वाहा क्षुगाय स्वाहा राय स्वाहा उद्भाय स्वाहा वाय स्वाहा भलाय स्वाहा परिपूर्णाय स्वाहा तवे स्वाहा विडाय स्वाहा विडाय स्वाहा धृताय स्वाहा तवे स्वाहा रामाय स्वाहा रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय अमृतये नमः स्वाहा रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय अमृतये नमः स्वाहा रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय अमृतये नमः स्वाहा रामचंद्रमूर्तये स्वाहा तत्विष्णोः परमं पदकं सदा वत्सेन्द्र सूर्यः शिवी विषट्टुरादकं ताग्रवां सप्तमं ददे विष्णोर्यत् परमं पदं महाविष्णवे स्वाहा विष्णोर्यत् परमं पदं महाविष्णवे स्वाहा नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् स्वाहा दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् स्वाहा दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामचंद्र प्रचोदयात् स्वाहा रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय अमृतये नमः स्वाहा रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय अमृतये नमो नमः स्वाहा महाविष्णवे स्वाहा Now in Agni you can see not only Lord Rama, you can see Hanuman also with Sita and also Lakshmana. If you see, before to start with Lord Rama came, and now after some time everyone has been arrived. So please take the blessings from Lord Rama and his and Sita and also from Hanuman. Wherever Lord Rama is there, even though we have not yet started Hanuman already, Hanuman is already there. So please get the blessings. ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् स्वाहा 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 ओम आंजनेयाय स्वाहा हनुमते स्वाहा सीतावल्लभाय स्वाहा हरिमर्कट मर्कटाय स्वाहा शांताय स्वाहा लंकावरे स्वाहा ओम रावणदूताय स्वाहा ओम धुमाय स्वाहा शिवनाथी स्वाहा ओम वायुपुत्राय स्वाहा ओम जानकी वल्लभाय स्वाहा ओम हरिमर्कटाय स्वाहा ओम शांताय स्वाहा ओम धामताय स्वाहा ओम गाकुलाय स्वाहा ओम अनलाय स्वाहा ओम सूक्ष्माय स्वाहा ओम शुद्धाय स्वाहा प्रबुद्धाय स्वाहा प्रदोक्षाय स्वाहा ओम आंजनेयाय स्वाहा मध्यवे स्वाहा महामर्कटाय स्वाहा हरिमर्कटाय स्वाहा दाय स्वाहा रंडाय स्वाहा दिवाय स्वाहा रामभक्ताय स्वाहा रामचंद्राय स्वाहा रामनाथाय स्वाहा मनोज्ञाय स्वाहा मधोक्षाय स्वाहा मध्यवे स्वाहा महा आंजनेयाय स्वाहा आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् स्वाहा आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि
तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् स्वाहा आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् स्वाहा आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् स्वाहा आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् स्वाहा आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् स्वाहा आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् स्वाहा। Offering bananas to Lord Hanuman. वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् स्वाहा आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् स्वाहा आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् स्वाहा आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् स्वाहा। आंजनेय स्वामिने स्वाहा। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायां पतये नमो नमः स्वाहा। Please get लक्ष्मण भरे समेत रामचंद्र मूर्तये स्वाहा। Please get the blessings from them. Now we are going to do Sri Suktam, offering Sri Suktam to lotus to Goddess Mahalakshmi, who is there in Agni already. We are offering lotus dipped with ghee. ओम हिरण्यवर्णां गरुडीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः स्वाहा तां महावः जातवेदो लक्ष्मीं मणवगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं कामस्वं पुरुषाणकं स्वाहा अस्मपूर्वां प्रथमत्यां स्थिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवी पक्वये श्रीर्मादेवी धृतां स्वाहा कांसोस्मितां हिरण्यप्रागारामाद्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं मध्ये स्थितां बुद्धवर्णां ताविमोहक्वये श्रियं स्वाहा चन्द्रां प्रभासां ससज्ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां बद्मिनीं चरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मेणस्य दां त्वां वृणे स्वाहा आदित्यवग्ने तपसोऽधि जातो वनस्पतिस्तव वृक्षोदबिल्वः तस्य बलानि तपसानन्दु मायान्तरायाच्च भाग्या लक्ष्मी स्वाहा उपैतुमां देव सह कीर्ति तमन्नासः प्रादुर्भूतां प्राट्रेस्मिन् कीर्तिमित्तं ददातु मे स्वाहा कृत्तिभासामलां ज्येष्ठा लक्ष्मीर्काशयाम्यहम् अभूदिवसवद्गन्ध सर्वाणितमे ग्रहा स्वाहा गन्धद्वाराञ्जुनादर्शानित्यपुट्टाङ्करेषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां ताविमोहक्वये श्रियं स्वाहा मनसकाममाभूतिं वाच सत्यमसीमहि पशूनां भूमनस्य महि श्रीश्रेदामि स्वाहा जातवेदो लक्ष्मीं मणवगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्यो स्वाहा विद्येयं पुरुषाणकं स्वाहा महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा श्रीवत्सस्वमायुष्यमारोग्यमावैदा शोभमानं जीयते धान्यं धनं वसुं पुत्रलाभं सतसंवत्सरं दीर्घमायुः स्वाहा सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्र महालक्ष्मी स्वाहा। ीं चिरसमुद्रान्तरयां श्रीरङ्गरामेश्वरीं दासीभूतसमुद्रवैवण्डां भूतेति दीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्त्रकटाक्षलब्धब्रह्मेन्द्र चक्राकां तां त्रैलोक्यमुनिप्रिया महादेवी विद्महे विष्णुपत्नी तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् महादेवी विद्महे तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् महालक्ष्मी नमः अंजनेयाय नमः भावाय नमः महालक्ष्मी नमः समस्त देवताभ्यो नमः सर्व प्रायश्चित्तार्थं होष्यामि केशवाय स्वाहा केशवाय नमः नारायणाय स्वाहा नारायणाय नमः माधवाय स्वाहा माधवाय नमः गोविंदाय स्वाहा गोविंदाय नमः विष्णवे स्वाहा विष्णवे नमः मधुसूदनाय स्वाहा मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय स्वाहा त्रिविक्रमाय नमः वामनाय स्वाहा वामनाय नमः श्रीधराय स्वाहा श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय स्वाहा ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय स्वाहा पद्मनाभाय नमः दामोदराय स्वाहा सर्वं श्री महाविष्णवे स्वाहा महाविष्णवे नमः। Now we are going to please stand up from your place.
We are now going to do the final Purna Huti, that is offering the final offerings with lot of auspicious materials. Along with it, mainly we want to offer your prayers also along with this Purna Huti. All your prayers will go to this Lord who is already there in Agni being invoked. Please pray whatever desires you have in life, whatever you want from Lord Rama, maybe your bhakti, your devotion to reach him like Hanuman, maybe anything you want, material success, to remove your dosa of sun, to give leadership powers, to give leadership abilities, to win this world, to gain more material welfare. Mahalakshmi is also there in Agni, you will get prosperity. Hanuman is also there, you will get lot of confidence and virya and strength, because Hanuman is a form of Lord Shiva himself, Rudra form. ராமரை பூஜிப்பதால் சர்வ ஆபத்துகளும் விலகுகிறது. So by doing rituals from Lord Rama will protect you from any dangers in life. குடும்பத்தில் ஒற்றுமை ஏற்படுகிறது. You will get more good things, good relationship with your family members. எவ்வளவு கஷ்டங்கள் இருந்தாலும் ராமர் எப்படி வனவாசம் சென்று திரும்பி வந்தாரோ அந்த மாதிரி ராமரை பூஜிக்கும் பொழுது நமது கஷ்டங்கள் எல்லாம் ஒரு நொடி பொழுதில் 14 வருஷம் வேண்டியில்லை, ஒரு நொடி பொழுதில் தீர்த்து வைத்து நம்மளை எல்லாம் ஒன்றாக சேர்த்து வைக்கிறதாக ஐதீகம். As you see, Lord Rama's history, he has lived by himself. Whatever struggles in life we have, Lord Rama will help you to overcome those struggles. And அதனால்தான் மனித வாழ்க்கையில் பல இடைஞ்சல்கள் வரும். எதிர்நீச்சல் போட்டு நாம் கடவுளை தியானம் பண்ணி நம்மளுடைய பிறந்ததுடைய நோக்கத்தை அடைய வேண்டும் என்பதுதான் ராமாவதாரத்துடைய நோக்கம். Everyone will have some issues in life because they are carrying karma with our sins in past life. Otherwise we won't be born in this place, this Bhuloka, because of our karmic reactions and sins from past lives. We are given a body according to our sins. So when you are doing these rituals, performing pujas and chanting the mantras of Lord Rama, will definitely get the real essence of what you came to this year. The real essence is you want to go back to God. We are just struggling in this vicious cycle of birth and death because we don't know. We are just getting a drop of honey, seeing lot of illusion around ourselves, and we are attracted towards that illusion. But the truth is, whatever you do, whatever material welfare you are gaining, even though you are lucky like Bill Gates or any other richest people, or you are powerful, or you are popular like Mahendra Singh Dhoni or anything, if you are even a prime minister, definitely you will have lot of problems in life. Not because you are richer, not because you are wealthier, not because you are popular, you will see happiness in your life. Definitely you have a karma which is added to you. Definitely one day death is nearing you. Definitely old age, disease, death and birth is common for everyone because we are in this body. We are living for 60, 70 or 80 years. We need to learn why we came here, what we need to do, and how we escape from this vicious cycle of birth and death. That's the full essence of Vedas. We need to go back to God, but in the process, even to be in this spirituality, we need to have some money, because money only will make our life sustaining. So let's do the rituals, let's pray to the Lord, let's pray to Goddess Mahalakshmi, pray that whatever she is giving to us, we will spend most of the time in spirituality and go back to God. Let me lead a life of Lord Rama. Lord Rama will never afraid of anything. He will never afraid of even the distress in the life. So he is only focused on righteousness. So let me focus on dharmic life. If you are in adharma, definitely you will struggle. You are adding sins. So please follow the right path. Don't do any mischievous activities. Don't even tell lies, because
It's all sins. Don't hurt anyone. Don't kill, mainly don't kill cows. Don't eat non-vegetarians. Because right now people are in a barbarian culture. We don't want to follow Western